थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर is a self-starting machine. Why it is self-starting? Because we are having the rotating magnetic field, and because of this rotating magnetic field, your relative motion between the field and conductor, which is there in the rotor side, because of these two and the relative motion between the field and rotor conductor, you will have a induced EMF in the rotor, and because rotor circuit is short circuited, you will have a current, and because of this current, a force is acting on each of the conductor, and this force is given by F equal to BIL. B is a magnetic field density, I is a current, and L is a length of the conductor. So this force is this is a rotor, this is your rotor, and force is acting tangential on each of the rotor conductor, and it is tried to rotate this rotor towards the rotating magnetic field side. If rotating magnetic field is in clockwise direction, then this rotation is also in clockwise direction. If it is a counterclockwise direction, this rotor movement is also in that direction. कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है, इसके लिए कोई अलग से मीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट फॉर सिंगल फेज मशीन में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई है, यहाँ पे देखो सिंगल फेज सप्लाई है, और ये एक वाइंडिंग हो गई स्टेटर की, माउंट होती है, जो आपके स्लॉट्स होते हैं उस पर माउंटेड होती है, और बीच में हमारा क्या है? बीच में ये रोटर हो गया. दिस इज योर रोटर कैसा है? जस्ट सिमिलर टू योर थ्री फेज इंडक्शन मोटर. कोई चेंजेस नहीं है, ये भी केज रोटर है और थ्री फेज में भी केज रोटर था. स्टेटर वाइंडिंग हो गई, रोटर वाइंडिंग हो गई. स्टेटर वाइंडिंग थ्री फेज में थ्री फेज होती है, सिंगल फेज में केवल एक फेज होता है. इसमें केवल आपकी एक लीड मिलेगी इधर, एक लीड मिलेगी इधर, बस. सो व्हेन a single phase induction motor is supplied or connected to the single phase supply, there will be a pulsating magnetic field. This is very important. Pulsating magnetic field. Why pulsating? Pulsating means what? एक बार increase करेगा, then decrease करेगा, फिर से increase करेगा opposite direction में, फिर decrease करेगा. In field we means that the field build up in one direction and fall to zero, and then build up in opposite direction, again zero, again build up in positive direction. This is your pulsating magnetic field. Why it is not self-starting machine? Single phase induction motor is not self-exciting because of pulsating magnetic field. Pulsating magnetic field will produce the pulsating torque, and because of inertia of rotor, it will not move. So under this condition, rotor does not rotate due to the inertia. Therefore your single phase induction motor is inherently not self-starting machine. It will require some means to start it up. It will require a auxiliary means. एक अलग से हमको स्टार्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है, एक हेल्प लगती है जो इसको स्टार्ट कर सके. वाइंडिंग इज एक्साइटेड and the rotor of the motor is started by an auxiliary means, and the starting device is then removed. आप उसको एक डायरेक्शन में स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, फिर वो अपने आप चलता रहेगा ड्यू टू द इनर्शिया. रोटर कंटिन्यूज टू रोटेट इन द डायरेक्शन विच इज स्टार्टेड. अब इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए दो तरह की थ्योरी दी गई. पहला है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी,
First one is a double revolving field theory, second is cross field theory. This is the second one. So very important is double revolving field theory. In double revolving field theory, in this field theory, we do have the two fields revolving in opposite direction. यहाँ पे हम क्या दो फील्ड कंसीडर करते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है. So in double revolving field theory of single phase induction motor, it basically stated that the stationary pulsating magnetic field can be resolved into two rotating magnetic fields, each of equal magnitude but rotating in an opposite direction. Each of equal magnitude and rotating in opposite direction. This is very important. And here one thing is also important, stationary pulsating magnetic field. This stationary pulsating magnetic field is divided into two things. So both of these fields are equal in magnitude but rotating opposite in direction. The induction motor respond to each of the magnetic fields separately. माने अलग अलग दोनों को लिए रिस्पॉन्ड करता है. एंड द नेट टॉर्क इन द मोटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द टॉर्क्स ड्यू टू ईच ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड. दोनों की वजह से टॉर्क होता है, दोनों में रिस्पॉन्ड करता है, और जो नेट टॉर्क होता है वो दोनों का सम हो जाएगा. द इक्वेशन फॉर एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी function of alpha is equal to B max magnetic field density maximum sin omega t into cos alpha, where B max is your flux density, this B max is your flux density, omega is your frequency, alpha this is a displacement angle measured between the stator axis winding, measured from the axis of the stator winding. माने कि स्टेटर वाइंडिंग की एक्सेस से कि कितना इस फील्ड का जो एंगल है वो कितना है, दिस दैट इज अल्फा. अब एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, वी नो दैट साइन ए कॉस बी इक्वल टू 1/2 साइन ए माइनस बी प्लस 1/2 साइन ए प्लस बी, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी टू विच इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 इस पे अप्लाई करेंगे. इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? अब देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी और कॉस अल्फा है, तो इसको हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 बी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, एक ये टर्म हो गया, दूसरा हो गया 1/2 बी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से ये इक्वेशन आ गया, बी मैक्स इज इक्वल टू 1/2 बी अल्फा इज इक्वल टू 1/2 बी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 1/2 बी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. अब ये जो पहला जो टर्म है ओमेगा टी माइनस अल्फा, दिस इज योर फील्ड मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड इट इज नोन एज फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड. दिस इज योर फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड, and second is your backward rotating field, backward rotating field. This is in minus of alpha direction. So it is therefore concluded that the stationary pulsating magnetic field can be resolved into two rotating magnetic field, both of equal magnitude and moving at synchronous speed in opposite directions at the same frequency as the stationary magnetic field alternates. When the rotor is stationary or at standstill, the induced voltage are equal and opposite. The two torque are also equal and opposite. जब ये fields equal and opposite हैं तो torque जो develop होंगे वो भी equal and opposite होंगे. किस condition में? शुरुआत के time पे at standstill, at the point of starting. So you can see here at the point of starting, this is your graph. At the starting point, this is forward rotating field, torque due to the forward rotating field, and this is the torque due to backward rotating field. Both of the points are
there, one is in positive direction and other is in negative direction. So at a standstill, both are equal and opposite. So net torque will be 0. Net torque will be 0. In the middle side you can see, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0. सो नेट टॉर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं. So that is a single phase induction motor with single phase stator winding is inherently has no starting torque. क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हो गया. पहला ये देखिए, पहला यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं. पहला ये हो गया. ये जो टॉर्क है येलो कलर से जो ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज योर टॉर्क ड्यू टू द फॉरवर्ड फील्ड. फॉरवर्ड फील्ड ये आपका बैकवर्ड फील्ड हो गया. यहाँ पे आपका ये सेकेंड वाला ये बैकवर्ड फील्ड हो गया, ये वाला बैकवर्ड वाला हो गया. बट स्टार्टिंग पॉइंट पे देख लीजिए दोनों बराबर है, अपोजिट है. तो एट द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग इट इज इनहेरेंटली 0. क्या? स्टार्टिंग टॉर्क 0. अच्छा, ये जो ग्राफ है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. You should explain this while discussing the single phase induction motor. This is very important. This is torque versus speed characteristics of single phase induction motor showing backward and forward field torques. And here you can see the torque is plotted against to the forward field, torque is plotted against to the backward field, and net torque is also there in the middle side. You can see this is your net torque. This is your net torque. So net torque will be 0 at the point of starting. So we need auxiliary means. Okay. So we are going to assume that ns is your synchronous speed and nr is your rotor speed. We are going to assume this. Let the rotor speed is nr and synchronous speed is ns. The slip of the rotor with respect to the forward field. What we are going to calculate? We are calculating the slip. We are calculating the slip due to the forward field. Due to the forward field. Slip of the rotor with respect to the forward rotating field. You know that slip is given by synchronous speed minus rotor speed upon synchronous speed. This is the formula of synchronous slip. Formula of the slip is ns minus nr upon ns. Let this is s. I am saying that, assuming that this is equal to s, or just rearranging the terms here, 1 minus nr upon ns. Rearranging the terms in this equation and getting nr upon ns equal to 1 upon s. So slip of the rotor with respect to forward rotating field SF is equal to ns minus nr upon ns. Let this is equal to s. Again rearranging the terms, we are getting from this equation we are getting nr upon ns equal to 1 minus s. Forward field के accordingly हमने पहले निकाल लिया. Then we are calculating for with respect to backward field. Backward field को represent किया है s b से. यहाँ पे ns synchronous speed है minus and minus of nr because it is rotating in backward side with the same speed. I am putting minus of nr and then upon ns. Then it is simplified. ns plus minus minus plus हो गया. ns plus nr upon ns. Again it is rearranging 1 plus nr upon ns. I am putting the value here. ns अपॉन nr अपॉन ns की ऊपर से वैल्यू पुट किया यहाँ पे, तो क्या पुट किया? 1 माइनस s. यू कैन सी हियर while discussing with respect to the forward field sf equal to s we have assumed. Now with respect to that one, slip of with respect to backward field is equal to 2 minus s. 2 minus s. That's why here 2 is there. For the backward field it is started with 2.
started with 2. Getting it? Why it is here? It started with 2. Now already told you we required additional means to start the induction motor. हम आइए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है. Method of starting. To make the single phase induction motor self starting or to make it start, it is temporarily converted into two-phase motor. Temporarily converted into two-phase motor during starting period. This is very important. For that, for short duration of time, at the time of starting, it is converted into two-phase motor. That's here. How we are creating the two-phase? Somehow we are inserting the winding. What kind of winding we are inserting? Just see here. The stator of single-phase induction motor is provided with an extra winding. This is known as starting all auxiliary winding. In addition to the main winding, main winding को क्या बोलते हैं? Running winding भी बोलते हैं. In addition with the main winding, we are providing with the auxiliary winding here. The two windings are spaced 90 degree electrically. These two windings are placed 90 degree electrical apart and are connected across the supply. जो पहला मेथड है, this is called a split phase motor or it is also called a resistance start method. This, if you are using the resistance start method for single phase induction motor, this motor is called split phase motor. Please mind it. If someone is asking that what are different types of single phase induction motor, you can write split phase motor, capacitor run motor, capacitor start motor, like this. If someone is asking about the different type of starting method, then you can write resistance start method. If you are using the resistance start method, then motor is converted into split phase motor. Okay. अगर हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड यूज कर रहे हैं फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, देन दिस मोटर इज कन्वर्टेड और नेम्ड एज अ स्प्लिट फेज मोटर. हियर दिस इज योर मेन वाइंडिंग, दिस इज योर मेन वाइंडिंग एंड दिस इज योर स्टार्ट वाइंडिंग. स्टार्ट वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एंड दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस सिंगल फेज सप्लाई. And in between, this is your rotor. By creating this 90 degree angle between the stator winding and start winding, or running winding and start winding, you can see from the phasor diagram, this is your voltage phasor. Because सर, yes, फिर से बोलिए एक बार. हो सकता है आपको स्टार्टिंग मेथड पूछे, हो सकता है आपको पूछे व्हाट इज स्प्लिट फेज मोटर, तब आपको यही डिजाइन करना पड़ेगा. आप देख लीजिए, स्टेटर मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का एंगल है, और इस को पूरी असेंबली को कनेक्ट करेंगे कहां पे? सिंगल फेज सप्लाई के क्रॉस. एंड ये स्विच दिया हुआ है, देखिए इधर एक स्विच दिया हुआ है. ये इस स्विच को क्या करेंगे? स्टार्ट के टाइम पे ऑन रखेंगे, जैसे ही मोटर रन करने लगेगा इसको ऑफ कर देना है, इसको ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा. मेन वाइंडिंग हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई रिएक्टेंस, दैट्स व्हाई इट इज नियरर टू द वोल्टेज फेजर. Start winding has high resistance or low reactance, that's why it is far from the voltage phasor. Start current हो गया because it is nearer to the V. It is nearer to the V, that means resistance effect ज़्यादा है. Resistance effect ज़्यादा है, that means it is 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 a current flowing through
करंट फ्लोइंग थ्रू ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है वो IS है, और जो मेन वाइंडिंग करंट फ्लो हो रही है वो है IM। तो IM को देखो इस तरफ से ज्यादा बनाया गया है वोल्टेज से दूर, बिकॉज अगर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट 90 डिग्री लैग करती है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। इस वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो पूरे तरह से 90 नहीं करके थोड़ा सीधा बनाया गया है। और ये दो करंट के बीच का जो एंगल है वो है, देखिए, अल्फा। अब इस करंट, इस IS करंट और IM का दिस इज योर I, एंगल बिटवीन वोल्टेज V and current I is your phi. Or because we are creating two phase, it will create a torque which is in unidirectional. किसी भी एक डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो उसी डायरेक्शन में आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। Which means I'm using a winding which is 90 degree apart from the main winding. I'm using an auxiliary winding 90 degree apart from the main winding, and because these two currents are interacting with each other, क्या करेगा, जो IS करंट है वो एक करंट प्रोड्यूस करेगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा, IM करंट है वो भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इंटरेक्शन बिटवीन द fields and currents, both of currents and both of the fields will create a torque, and that torque will gives the starting of the induction motor. Now second method is capacitor start method, and this kind of arrangement is called capacitor start single phase induction motor. You can see here, this is your main winding, and just 90 degree to this we are creating a auxiliary winding or start winding. Here we are having the inductance plus capacitance. LC branch we are connecting 90 degree apart from the main winding, and whole assembly is connected across a single phase supply. This is a single phase supply, and just similar to the above, this is your rotor, cage rotor. In this time, again we are taking the voltage as a reference. This is a voltage phasor as a reference. Then just similar to above, this is your current phasor. Which current? The current which is flowing from main winding, IM, and our aim is to create the two phase. We are having a current IS here flowing through auxiliary winding or start winding. This is your IS. It is leading from the voltage. Why it is leading from the voltage? Capacitance के लिए resultant current is a phasor addition of IS and IM. This is your resultant current I. This is your resultant current I. And again this time, creating of two phase will create a unidirectional torque, or it will give the net torque in either the direction. This is called a capacitor start single phase induction motor. In the third type of starting, this is known as capacitor start, capacitor run single phase induction motor. इसमें क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट भी है और कैपेसिटर रन भी है। अच्छा, पहली मोटर में क्या करते हैं, जैसे ही ये टर्न ऑन हो गया, स्पीड पिकअप कर ली, ये स्विच से ऑफ कर देते हैं, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देते हैं, ऑफ कर देते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड लगभग सेम है अब ऊपर वाले की तरह, लेकिन यहां पे क्या करते हैं, जो स्टार्ट कैपेसिटर है, दिस इज जो स्टार्ट कैपेसिटर, दिस कैन बी टर्न्ड ऑफ आफ्टर स्टार्टिंग. After the starting, this can be cutted off. CS can be cutted off, but
CR is there while running also. That's why this type of arrangement is called capacitor start. Because of CS this is capacitor start, and because of CR this is capacitor run. Here CS is your start capacitor and CR is your running capacitor. Value of CS is higher than the value of CR. This is very important. Value of CS is as compared to CR is very high. Value of CR is higher than the value of CR. Here CR is your electrolytic capacitor and CR is your small paper capacitor. Next is your permanent capacitor single phase induction motor. Permanent capacitor single phase induction motor. While designing with this kind of motor, third one, we can see or we have observed that the performance is increased while using the capacitor during the run time. So because of that we have evolved the permanent capacitor single phase induction motor. It is also known as single valued capacitor run motor. This is your single value capacitor run motor. It has a stator winding placed 90° apart. Again main winding is this and auxiliary or start winding is this. Both of 90° apart electrically. There is no switch is given over here in the start winding branch. In the start, you cannot see any kind of switch is given over here. That means during the start and during the run time, this winding or this branch will be connected to the motor. We have a shaded pole motor. Shaded pole motor. This is a very special motor, shaded pole motor. Here what we are creating the shadings and putting the rings are copper rings. I think it is a copper rings. We are just grooming, creating a slot on the stator and just giving a ring here, ring shape. Torque will be produced due to the interaction between the fields. अब वो फील्ड क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट में होनी चाहिए, वही यहाँ पे शेडेड रिंग की वजह से क्रिएट हो रहा है. It is called as shaded pole motor. When the main winding is connected in single phase supply and alternating flux is set up in the core, this change in flux induces short circuit currents in the shaded rings or coils which is there in the stator core. The direction of these currents in such a way that to oppose the main or core flux. यहाँ पे क्या है, रिंग्स जो पुट किया है आपने स्टेटर कोर में, इसमें जो भी करंट जनरेट होगा, जो भी फ्लक्स जनरेट होगा, वो अपोज करेगा मेन फ्लक्स को. अपोज करेगा माने कि उसका डायरेक्शन तो होगा नहीं. तो अब यहाँ पे दो फील्ड हो गई, एक तो मेन फ्लक्स हो गया, दूसरा एक फ्लक्स वो हो गया जो शेडेड रिंग की वजह से हो गया. तो अगेन अब आपको कंडीशन स्टार्टिंग हो गई, स्टार्टिंग कंडीशन, देयर विल बी अ टू फील्ड्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर. दो फील्ड होनी चाहिए, दोनों के बीच में स्पेस और टाइम का एंगल होना चाहिए, देन दे कैन प्रोड्यूस द स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ दिस मोटर. So we have created, and because of the flux in the shaded part of the pole lags behind the main or core flux, which is less than or equal to 90°, this will create the starting condition of this motor. क्या करना है इसमें, केवल पोल्स में एक ग्रूम करके शेडेड रिंग फिट करनी है. शेडेड रिंग फिट करने की वजह से एक फ्लक्स अलग सा प्रोड्यूस होता है, वो अब मेन फ्लक्स को अपोज करेगा. तो अब हमारे पास दो फील्ड्स हो गई जो इंटरेक्ट करके टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे. करेक्ट.